हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो हम लोग एक टेबल को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लिए हैं, 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर 4। 1 और 4 के बीच में देयर आर 2 and 3 which are नॉन स्क्वायर नंबर्स। सो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने हो गए? 1 and 1 2, दैट मीन्स 2 नॉन स्क्वायर नंबर्स। अब अगर इन दोनों का हम लोग डिफरेंस को चेक करें, सो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो वो कितना आएगा? 4 minus 1 दैट इज 3। और इस डिफरेंस में अगर हम लोग 1 डिडक्ट कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? 3 minus 1 which is 2. So this 2 is same as this. Let's take another example. 2 square and 3 square, दो consecutive square numbers. 2 square is 4, 3 square is 9. इनके बीच में 5, 6, 7, 8 which are in total 4 non-square numbers. Now अगर हम 3 square minus 2 square करें तो क्या आएगा? 9 minus 4 which is 5. और इसमें से अगर 1 डिडक्ट करते हैं तो we get 4 again which is same as the number of non-square numbers between these two perfect squares. Now let's take another example. Suppose 3 square and 4 square. If you consider these two consecutive square numbers, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16. Between them there are 10, 11, 12, 13, 14, 15 which are in total 6 numbers. So these 6 numbers are non-square numbers between 9 and 16. Now इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इट विल बी, दैट मींस 16 minus 9 it will be 7. और 7 में से अगर 1 डिडक्ट करते हैं अगेन वी गेट द सेम नंबर 6 which is exactly the same as number of non square numbers between 9 and 16. So we can say कि अगर हम लोग दो स्क्वायर नंबर्स लेते हैं, एक को अगर n स्क्वायर पकड़े और कंसेक्यूटिव वाले को अगर हम लोग n+1 स्क्वायर बोले, ये जो n है ये इन जनरल किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ठीक उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? n+1. n का स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर रिप्रेजेंट्स टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। नाउ इनका डिफरेंस जो होगा, इनका डिफरेंस इफ यू कैलकुलेट n+1 का होल स्क्वायर इफ यू फाइंड and then if we subtract n square, then what we get? We get 2n+1. Now is 2n+1 में से if we deduct 1, what we will get? We'll get 2n. This 2n represents nothing but the number of non-square numbers which will exist between these two consecutive perfect squares. So this gives us a formula to calculate the number of non-square numbers between consecutive square numbers. Now, so we can say there are 2n non-square numbers between squares of n and n+4. For example, suppose we need to see कि 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। तो we don't need to calculate or see write one by one all of them and then count. We just need to see कि what is the value of 2 into 12, which we know 24. That means between 12 का square and 13 का square there are 24 non-square numbers. That means between 144, 12 square is 144 and 13 square is 169. So between 144 and 169 there are 24 non-square